My mother has decorated this temple. So every time I worship God, I'm gonna tell you guys that this is my mom's creation. My Maggie is ready. I thought of preparing the Maggie with Maggie masala, but then I later changed my mind and decided to make noodles instead with the normal spices. And I added paneer, tomato, cheese in here. So I'm ready to have this. Wow, I love seeing the sky. It's quite cloudy, it's quite sunny. This is the peaceful, calming weather of Siliguri. Although it's quite hot because it's already summer, but I have to say, I'm feeling so good. After so long, I came in the terrace and I'm enjoying the greenery space out there, surface. Okay, is it touch me not plant? What do you think? Looks like that. Kind of looks like that. It is, right? It is touch me not plant. And this is curry leaf. This is not ours. It's someone's flat owner's. I'm scared if my phone falls off, it will be gone forever. This is marigold. This is hibiscus. And look at these pretty flowers. Roses. Oh, I love roses. I once wrote somewhere in the terrace, somewhere, that we should plant trees. We should keep the terrace fully green. At least one resident heard me. This is Tulsi. This is Tulsi. What is this? I don't know. And here we go. Aloe vera plant. We have aloe vera plant at home. My mom planted. Sometimes it's kind of messy to cut the aloe vera and then put it wherever you want. Especially for me. I'm kind of lazy. And sometimes I'm fast. It depends. And look at this banana plant. It grew quite long. I want to pluck that flower. Can I? Yeah, I can. Wow, I did it. And if I keep it in a उस साइड के नज़ारे यहाँ पे पाइन ट्री भी है. मैं पाइन ट्री को बहुत अच्छे से देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ. और यहाँ पे छोटे छोटे पंछी आते हैं, खेलते हैं, और उनके जो आवाज़ होते हैं, सो क्यूट, स्वीट, पीसफुल. तो यहाँ पे सुबह को जब आएंगे तब वहाँ पे एकदम एट द टॉप नोच वहाँ पे छोटे छोटे स्पैरोज दिखेंगे, और भी कितने तरह तरह के पंछी यहाँ पे आते हैं. तो मैं देखती रहती हूँ. पर नीचे जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे जो घर है, इतना शोर शराबा होता है, हॉर्न्स बजते रहते हैं, क्योंकि हम लोग रास्ते के ऊपर रहते हैं, मेन रोड. तो पीसफुल फील नहीं होता है. लेकिन जब टेरेस पे आती हूँ तो हर चारों तरफ ग्रीनरी, प्लांट्स, ट्रीज, तो अच्छा लगता है बहुत. लेकिन अक्सर मैं यहाँ पे आती नहीं हूँ. तो जब आती हूँ तो पूरी तरह से मैं नेचर को एंजॉय करती हूँ. ये देख रहे हो आप लोग, ये मैंगो ट्री है. और 2 महीने पहले इस पेड़ पे बहुत सारे मैंगोस आए थे.
छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे ग्रीन ग्रीन मैंगोज आए थे, तो मुझे तो बड़ा खाने का मन हो रहा था। नीचे भी गिर रहे थे तो कुछ लोग उठाकर भी लेकर गए। तो ये मैंगो ट्री गर्ल्स स्कूल का है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ अ बर्ड? Here is the sweet shop. ওনা ওরকম ভুল নাই নাকি শুধু গাঁদা নাই কটা তুই এগুলো সিস্টেম কবে জানা বলবি 10 টাকা শুরু। So I took the flowers and these are so pretty and I'm so excited to gift my mom. I'm gonna surprise. It's so hot outside. I already gave these flowers to my mom and she was so happy. And these two ice cream, these are mango flavors, and I bought one for my brother, one for my mother. They'll share, so I'll eat from both of them. And this is mishti doi, sweet curd, and this is tok doi, khatta. So yes, this is purple, and I place them in a water jar so that they can stay fresh. And I've trimmed them. और ये मैंने दूध डाल दी चाय पे, और ही उबालने लगी है। कुछ ऐसा चाय कलर दिखी है, लाइट जला दी वो करना है अच्छे से। मैं किचन का लाइट जला दूँ? इतनी बारिश हो रही है, मौसम तो बहुत ही बढ़िया है, पर कितने बढ़िया वाला मौसम। तो ये मैंने पिज़्ज़ा के लिए मैदे ले लिए और मैं अभी इसको एक डो में तैयार करूँगी और जल्द से जल्द आपको दिखाती हूँ ये कैसे बन रहा है। और ये मैंने कुछ पनीर लिए हैं और स्क्वायर शेप में टोमेटो एंड अनियन काट लिए पिज़्ज़ा के लिए। So sadly I have to say that we are not getting the tray of oven. So my brother gave me an idea to make a pizza in this tawa, that is, you can say pan. And these are the chopped paneers. So I'm gonna roast them lightly, and then I have prepared this pizza sauce. I cannot show it in one hand. मैंने पिज़्ज़ा काफ़ी टाइम पहले बनाए थे, few months back, और तब मेरे मम्मी ने मुझे हेल्प कर दिए थे, डो बना के दिया था मम्मी ने। पिज़्ज़ा ब्रेड मम्मी ने बनाया था और मैंने बाकी की टॉपिंग्स की थी, और अवन में मेरे भैया मेरे हेल्प किए थे। और इसको मैं हल्के से रोस्ट करने के बाद मैं इस पर ये डालूँगी पिज़्ज़ा सॉस जो कि मैंने बनाया है। ये खुजा, ये थोड़ा सा मैंने तेल पे डाल के करनी है। मुझे पूरी तरह से रेसिपी याद नहीं है, बट आई होप कि यही रेसिपी हो।